हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप। आई एम तनुश्री। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि नबार्ड ग्रेड 2025 का फेज 2 एग्जाम 25 ऑफ जनवरी के लिए है और इस एग्जाम को बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर्स आपके लिए सबसे हेल्पफुल टूल होंगे। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो के अंदर हम एआरडी और ईएसआई का 2024 एंड 2023 ये दोनों ईयर्स के जो फेज 2 के पेपर्स हैं उनको यहाँ पर कंप्लीटली डिस्कस करेंगे और आपके साथ सॉल्व करेंगे। तो ये वीडियो है, ये थोड़ी लॉन्ग हो सकती है बट ये आपके लिए एक्सट्रीमली हेल्पफुल रहने वाली है। ऑन दैट नोट, लेट अस बिगिन आवर टुडेज सेशन, बट बिफोर आई डू दैट, students, if you are interested in having a paid mentorship for your NABARD grade A preparation, then you can visit our website edutap.in. For phase 2 we have launched the live plus recorded crash course. As part of this crash course, we are going to provide you the live classes, recorded classes, solve previous year questions for every chapter, descriptive fodder material, and the model question and answers for every chapter also. Along with that, chapter wise quizzes and the full length mock tests are also a part of this crash course. Apart from that, students, you can also, if you are preparing on your own, then you can also enroll yourself into the phase 2 test series, and as part of this test series we are going to provide you the solve previous year questions, chapter wise mock test, current affair mock test, and the full length mock test. So these are the deliverables that are currently available on our website for your NABARD grade A phase 2 preparation. On that note, let us begin our today's session. But students, this is the best time to enroll in these courses because currently we are running a flat 77% off on all our NABARD grade A courses. You can use the code New Year 77. This offer, it is valid from 29th of December till 31st of December. On that note, let us begin our today's session. Hi everyone, welcome to EduTap and welcome to this video. I hope your preparation for NABARD grade A is going well and you all have now decided that you have to prepare for this exam and you might be actively preparing for this. Now when we prepare for any examination, it's very important that we know which kind or with the type of question that are being asked in this examination. So we have already covered phase 1 PYQ of 2023 NABARD grade A exam, and in this video I and Gurkeerat sir will be discussing phase 2 NABARD grade A 2023 previous year question of ESI and ARD, that is objective part. Okay, so that is the agenda of this video so that you guys can see what type of questions are being asked. Not only we are going to discuss the type of questions or the questions that were there, we are also going to tell you about the difficulty level, which questions you have to attempt, what type of question you have to leave. Not only that, at the end we are going to discuss topic-wise distribution as well as the difficulty level of each question. So that's the agenda of this video. But before I start, I request Gurkeerat sir to please take ahead. First, I'll be taking up your ARD questions that are of 2 marker, right? So let's start with first question. So very first question is from ARD current affair part. You can see a paragraph based question is there, and you might know that in phase 2 examination you get 2 marker and 1 marker type of question. So these paragraph type of questions are basically 2 marker type of questions, right? So there was a paragraph regarding PACS, okay, computerization of PACS. Now first question is very easy question from this paragraph, that PACS has been mentioned in the above paragraph. What does PACS stand for? So it's very easy question. Just you have been asked full form of PACS, which is Primary Agriculture Credit Society. Now if I tell you about the difficulty level of this question, it is very easy, right? It is doable and here you can score good marks, right? Now here the next question is regarding the center has announced a 47 member committee under former Union Minister Dash to prepare national cooperation policy to promote a cooperative based economic development model. Now here you have been asked to name a minister, Union Minister, right? Now if I talk about this question, this is a difficult level question because usually we do not remember the ministers involved in these things, right? तो इस क्वेश्चन को मैं डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन बोलूंगी because here minister name has been asked to you, but yes, if you know the answer you can attempt it, otherwise such question can be skipped, right? Now next question is regarding again the same. In order to make PACS self-reliant and in tune with Atmanirbhar Bharat Abhiyan, the government of India has on 29th June 2022 approved the centrally sponsored project for the computerization of PACS for the period of. Now again I would say easy to moderate level question. Here answer will be 5 years. You have been asked target year, right? So usually we cover these things. Usually we have seen such questions are being asked in these examination, and this thing we cover while we read about these things, right? So it's a easy to moderate type of question. Now next question is regarding which of the following is the implementing agency for the centrally sponsored project
for the computerization of primary agriculture credit society? Answer is NABARD. Again, a very easy question, right? So this is a question regarding your ARD current affair, which is a paragraph based. Now, next question was asked from ARD static. Again, a paragraph based question, and this question was based on rice cultivation. Here, a whole paragraph was given, and there were two fill in the blanks, and you have to, answer the question based on these blanks, right? So, question, the blank one was plowing is dash operation which is performed to cut, break, and invert the soil partially or completely suitable for sowing seed. Now, what is this plowing? Plowing in rice is a primary tillage operation. A very easy topic. Tillage usually we cover in ARD static, right? So here answer will be primary tillage, and the difficulty level of this question will be, I would say, is easy, right? Now next question is regarding dash is used for churning the soil with standing water while preparing field for paddy transplantation. It is used after completing an initial plowing with an iron plow or country plow. Here the equipment, the implement have been asked to you कि कौन सा implement use होता है for puddling purpose in rice, and answer will be puddler, right? Again a easy to moderate level question, कोई ज़्यादा difficulty नहीं है यहाँ पे answer करने में. Now next question was regarding objective of tillage in rice. Now here if you know why tillage is done in rice, then again a very easy question, but if you do not know the clear objective of rice, because here you might get confused कि the puddling, how this puddling is useful in soil and water conservation, right? But let me tell you, it is useful in soil and water conservation. So seed bed preparation, weed control, soil and water conservation, to remove hard pan, all these will be the objective of puddling, right? So here students, not only you have to learn the things, but also you have to know the concepts. आप देख सकते हो concept से भी questions पूछे गए हैं. अगर आपको objective नहीं अच्छे से पढ़ता है, then you won't be able to answer such question. Talking about next question, which is from ARD current affair. Recently, Indian Institute of Millet Research has established a center of excellence for the promotion of millets in which of the following place. So 2023 was celebrated as International Millet Year. So millet से क्वेश्चन आना ही था. यहाँ पे आपको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पूछा गया कहाँ पे स्टैब्लिश हुआ था, and answer was Hyderabad, right? I hope now till now you have understood the type of 2 marker question asked from ARD current affair as well as ARD static. Now I'll ask Gurpreet sir to take over. Thank you, ma'am. So now guys, when I talk about your current affairs part, obviously if you see the paper of 2023, it was not that of an examination where I will say the paper of current affair was out of the box. No, it was on an expected line. You can see the first question on Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act scheme. It's a very important scheme, guys. We have been talking about this scheme whenever we talk about NABARD because it is clearly defined in the syllabus of NABARD examination. So if my dear friends, you are preparing for NABARD examination and somehow यू आर थिंकिंग कि नरेगा स्कीम छोड़ देते हैं, तो भाई फिर तो आप मत पढ़ो, क्योंकि आपको हर साल इस पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा. हाँ, लेवल डिफिकल्ट ऊपर नीचे होता रहेगा बिकॉज यहाँ पे तो पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन था. एंड इफ आई टॉक अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड, नाउ सी ऑल ऑफ अस नो दैट दिस स्कीम इज इंपॉर्टेंट. वी विल बी कवरिंग दिस स्कीम. अब पॉइंट क्या होता है कि नाबार्ड एवरी ईयर यूज टू आस्क सम ऑफ दैट सेट ऑफ क्वेश्चंस जहां पे थोड़ा सा आपको अपने आप को टेस्ट करना पड़ता है. लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन. द फर्स्ट क्वेश्चन वाज हाउ मेनी डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट इज प्रोवाइडेड फॉर द हाउसहोल्ड्स लिविंग इन फॉरेस्ट एरिया, नॉट इन ड्रॉट एरिया, फॉरेस्ट एरिया पूछा. तो क्या था आंसर? आंसर था 150 डेज मिलते हैं वहां पे. बट अगेन it's a moderate level paper. It's not an easy question that has been asked. It's a difficult, I would say it's a moderate level question that has been asked. कि फॉरेस्ट एरिया जनरली आप नहीं पढ़ते, आप ड्रॉट एरियाज पढ़ते हो या फिर आप नॉर्मल डेज पढ़ते हो. Coming to the next question. Next question I would say is a very easy question, guys. Very easy question. Under the NREGA, additional 50 days are being provided for over and above 100 days. Simply that is in drought and natural calamity areas here. Very easy question. Nothing to be seen here, boss. आसान क्वेश्चन आया था. अब आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर. ये वाला क्वेश्चन भी थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है बिकॉज यहाँ पे भी आपको अपने आप को अगर आपने पढ़ा है तभी कर पाओगे, अदरवाइज ये क्वेश्चन ऐसे हैं अगर आपने नहीं अच्छी तरह पढ़ी, स्कीम ऊपर ऊपर से पढ़े, तो ये क्वेश्चन आप छोड़ दोगे, ये आप छोड़ दोगे, नहीं कर पाओगे. अब मैं आपको हमेशा बताता हूं, जब मैंने नरेगा स्कीम आपके साथ पढ़ी भी थी, व्हेन वी हैव डिस्कस्ड दैट स्कीम इन गवर्नमेंट स्कीम सेशन आल्सो, कि इट हैज बीन सेड दैट it said if the demand employment is not provided within 15 days, obviously you will be getting unemployment allowance. So how that is going to be provided? This is what it is being said here. Unemployment allowance of at least how much of minimum wage will be provided for first 30 days and dash of minimum of age for
the remaining financial year, that is 1/4 and half year. Again, it's a moderate level question and not that much easy, but obviously अगर आपने अच्छी तरह पढ़ी होगी इसकी तो आप इन क्वेश्चन को कर सकते थे. अब यार आते हैं फाइनल क्वेश्चन के ऊपर. ये क्वेश्चन ऐसा था in the year of 2023, which I also personally say I do not know why NABARD has asked this question. As of now, I do not know. Okay, there is no clear-cut demarcation of this question where it is being said that which among the following initiatives are organized at ward and gram panchayat at least once a month for creating awareness about the employment generation in rural areas. अब यहां पे उन्होंने किया क्या है? Narega is a scheme which is talking about employment generation at rural area. So what they have done is they have basically, it's not a question for directly from the scheme. It's a question that is a practical based question that has been asked to you. अब ग्रामीण एरियाज में क्या होता है? चौपाल दिवस होता है, रोजगार होता है, सहयोग होता है, सारथी होता है, सहायक होता है. तो एक्चुअल में हर ग्रामीण एरिया में हर महीने में एक ग्राम रोजगार दिवस मनाया जाता है to basically creating awareness about the schemes that has been launched by the Rural Development Ministry for employment generation. अब क्योंकि नरेगा स्कीम भी रूरल डेवलपमेंट के अंदर आती है तो मे बी इन कंटेक्स्ट ऑफ दैट दे हैव मेड दिस क्वेश्चन. ठीक है, बट अगेन मैं बोल रहा हूं अच्छी तरह पढ़ के जाना. 24 में तो कंप्लीट बाउंसर आया था ना सबको when they have asked question of नरेगा from economic survey. So which means this is one scheme जहां पे जो भी न्यूज में चल रहा है you should have an idea. Let's come to the next question that is from ESI current affairs. Majority of students always ask me question whether we have to prepare ESI current affairs for 2 marker or not. You should prepare. You can see the example in front of you. नेशनल सिकल सेल एनीमिया मिशन लॉन्च हुआ था यूनिट बजट 2023 में विद अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव कि 2047 तक हमें सिकल सेल डिजीज को एलिमिनेट करना है और यही इन्होंने पूछा भी है. ठीक है, लुक एट द पॉइंट. मिशन हैज बीन लॉन्च्ड इन शहडोल distributing sickle cell genetic status here and by we want that by 2047 we want to eliminate this thing. यहीं से हमें आइडिया लगे थे कौन सा मिशन है. पहला क्वेश्चन इजी, सिकल सेल एनीमिया मिशन. सेकेंड क्वेश्चन इट वाज टॉकिंग अबाउट द की फीचर्स ऑफ द प्रोग्राम. What are the preventive measures that have been mentioned in the above paragraph with respect to this specific initiative है. अब पूछा गया स्ट्रेंथनिंग ऑफ स्क्रीनिंग एंड टेस्टिंग होगी, हेल्थ प्रमोशन अवेयरनेस जनरेशन की जाएगी, प्री मैरिटल जेनेटिक काउंसलिंग की जाएगी, स्ट्रेंथनिंग की जाएगी, लेबोरेटरी सर्विसेज फॉर डायग्नोसिस. अब यार इस तरह की चीजें अगर आप इस पॉइंट ऑफ टाइम में पढ़ रहे हो, whenever you talk about any recent initiative being launched by the government of India, we should be aware about what this program is actually wants to do. That is why I always say to you guys, start understanding current affairs. अंडरस्टैंड करो ESI ERD करंट अफेयर्स को, रट्टा मत मारो. PACS वाला जो क्वेश्चन मैम ने आपसे अभी डिस्कस किया ना, वो दिसंबर 2022 से स्टार्ट हुआ था, आपका पेपर अक्टूबर के आसपास हुआ है. Until September 2023 the PACS was continuously seen in news. अब उन्होंने उन्हीं चीजों को मिक्स किया है स्टार्टिंग क्वेश्चन में. यहां पे भी उन्होंने आपसे बेसिक पूछा कि अगर सिकल सेल डिसीज को कंट्रोल करना है तो ऑब्वियसली क्या करोगे, कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स तो लोगे. They have asked this question only to you. This is how whenever I talk about your current affairs, तो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा नहीं कि आपको कुछ बहुत क्रैम करना है. You understand, you can give the answer here. So that's again a moderate level question that has been asked here. Then the question was, which of the following statements are correct? The first statement is on eligibility criteria here. So people from 0 to 18 years of age are eligible to avail the benefits here. It shall incrementally include the entire population up to 45 नहीं था, up to 35 years था as part of National Health Mission. ठीक है जी. फिर था द मिशन नेम्स टू कवर 7 करोड़ पीपल विद स्क्रीनिंग काउंसलिंग फॉर प्रिवेंशन. तो ये बिल्कुल सही था. तो ये अगेन मिशन करना क्या चाहता है, एलिजिबिलिटी क्या है, वहां से क्वेश्चन हमसे आपसे आप पे पूछा गया था. अगेन आई वुड से दैट्स अ डूएबल क्वेश्चन हियर. तो देन दिस इज तो ऑलरेडी हैज बीन मेंशन्ड इन द पैराग्राफ आल्सो. कौन से ईयर तक का टारगेट था, 2040. इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन. ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड. दैट इज अ क्वेश्चन दैट इज बेसिकली बीइंग asked to us, जहां पे क्या किया गया, एक पैराग्राफ बना के उससे क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने. ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ यू लुक एट दिस क्वेश्चन हियर, इट इज बीइंग सेड दैट यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हैज अनाउंस्ड about the allocation of rupees 2248 crore against the corresponding of 1624 crore rupees here. ठीक है जी. She has announced a new central sector scheme under प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना. And when you have discussed about that thing in the budget of 2023, कौन सी स्कीम आई थी, ये वाली प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सहाय योजना, जिसकी गाइडलाइन 23 में आई है. इन 24 द गाइडलाइंस हैव कम अक्रॉस. 24 जनवरी में गाइडलाइंस आई थी,
बट उससे पहले क्या था, 2023 में ये स्कीम अनाउंस हो चुकी थी और उन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे सिंपल यही पूछा कि कौन सी सब स्कीम आ रही है, विच मीन्स इफ अ स्कीम इज सीन इन न्यूज, उसके ऊपर कुछ चेंजेस हो रही हैं तो वो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जा सकती हैं. इट्स अगेन अ डूएबल क्वेश्चन, आई वुड से इजी क्वेश्चन, बिकॉज 23 का पेपर का मैं बात करूं, अगर आपने पढ़ा होगा तो इतना मुश्किल पेपर नहीं था करंट पॉइंट ऑफ व्यू में. स्टैटिक में ऑब्वियसली देयर आर सम थिंग्स व्हिच यू माइट नीड टू नो. And now I come to the question number 18th here. I think that is where Shamli ma'am will be taking you forward here from these questions which are basically from ARD static here. Now over to you. Thank you, sir. So the next question is from ARD static, and this is the question from soil and water conservation chapter. Now students, earlier the different type of questions have been seen from this chapter, but now usually conservation part से आते थे, but इस time पे आपको saline soil, problematic soil से question पूछे गए, and there was a paragraph based on that, and you have to answer few questions based on that paragraph, right? Now this was unexpected, this is a change in trend, I would say, of ARD static that has been seen in phase 2. phase 2 में थोड़ा सा आते ही है क्वेश्चन जो थोड़ा सा प्रेडिक्टेबल नहीं होते हैं. सेम दिस वाज द क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड टू यू बिकॉज बिफोर देयर वर नो क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम द प्रॉब्लमैटिक सॉइल, राइट? सो हियर द क्वेश्चन वाज रिगार्डिंग what is the pH and electrical conductivity of saline soil, right? So saline soil की pH and electrical conductivity, so pH is 7 to 8.5 and electrical conductivity is more than 4, right? Now students, next question, less than 4. Next question is saline soil has dash gram per liter of sodium. Now students, this was a very difficult level question, I would say, because this is something which has been taken from a report of Food and Agriculture Organization, right? So this was a very difficult question because बहुत rarely ये data available होता है. And इस question को, such question you have to leave. You don't have to attempt it if you do not know the answer, right? So these are some difficult level question that has been incorporated to increase the difficulty level of this exam, right? So next is, which of the following process lead to accumulation of sodium in soil? So again, a different form of question that has been asked. Usually these processes were not asked in the examination, but here you have been asked the process which lead to accumulation of soil, and that is known as salinization, right? So you have to learn all these processes as well. You have to learn about all the problematic soil for your coming examination. So this tells us that phase 2 is a little bit unpredictable in nature when it comes to ARD static. There can be some detail or there can be in-depth question asked to you in your phase 2. So you have to be prepared for that, right? So अपनी जो preparation है उसको इस तरीके से करना है कि phase 2 के लिए भी आप ARD static के लिए तैयार रहें. Now these are the questions which are of 1 marker in nature. So question was, which of the following is a complex fertilizer? Again, a moderate level question, not a very difficult level question. We already covered nutrient and fertilizer in soil and water conservation chapter. Answer for this question was DAP, that is diammonium phosphate, right? Now next question was regarding a breed that was asked to you. So this breed was of sheep. Now again, not a very common breed. So I would say this question was of moderate level. Next question is regarding a cropping system where you have been given in which of the following cropping pattern 4 crops are grown but 1 crop is cultivated before the harvest of previous crop. A repeated question that has been seen phase 1 में भी phase 2 में भी कई बार ये question पूछा गया है based on relay cropping. So the answer was relay intercropping, right? Next question was regarding the fish cultivation. So is in which of the following culture system more than one type of fish is cultivated? So it will be polyculture, right? Polyculture is where we are cultivating more than one type of fish. Next question, again a very easy to moderate level question. Next question is, the idea of the establishment of Krishi Vigyan Kendra was developed by which of the following committee? Very easy question again from rural development chapter. So it's Mohan Singh Mehta committee, right? So I hope it's clear. Now next I'll ask sir to take ahead. थैंक यू मैम. सो नाउ गाइस लेट्स टॉक अबाउट दिस थिंग हियर. अब नाबार्ड में स्कीम्स पूछी जाती हैं, हम सबको पता है, एंड ऑब्वियसली इफ यू आर प्रिपेयर, इफ यू आर अ सीरियस एस्पिरेंट ऑफ नाबार्ड एंड इफ समहाउ अगर आपको लग रहा है कि मुझे नाबार्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करनी चाहिए, तो मैं आपसे एक चीज़ बोलूँगा. अगर एक ऐसा चीज़ है जो आपको बिल्कुल नहीं छोड़नी है, वो है गवर्नमेंट स्कीम्स. यू कैन सी द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड ऑन नरेगा. यू कैन सी हियर now there also they have started asking question on those schemes जो कि recently news में थी और launch हुई थी. PM Vishwakarma scheme is one of that scheme which was launched that year. Look at the question that has been asked. It's a case study based question, but it's a very easy question. Very easy question. Why I am saying it's an easy question? Just understand that
Which of the following persons are eligible to get the benefits of PM Vishwakarma Yojana here? And look at the statements. It says Ram, who is a rubber artisan, an artist involved in toy making, and third is saying a girl tailor whose husband is a class C clerk in government department. We know it's a very, very simple thing. Whenever we heard about the about eligibility criteria in the government under the PM Vishwakarma scheme, it has been clearly defined that government servant is not a part of the scheme. चाहे वो आर्टिजन हो, कुछ भी, अगर वो गवर्नमेंट सर्वेंट है तो पार्ट नहीं होंगे. तो यहाँ पे सिंपल चीज है. अब वो क्या, आपको सारे फॉर्म्स ऑफ ट्रेड याद रखने नहीं. अब यहाँ पे अराउंड 18 ट्रेड फॉर्म्स है जिसको हमने इनिशियली पिकअप किया था फॉर द पीएम विश्वकर्मा स्कीम. अब क्या मैं आपसे बोलूं कि रबड़ आर्टिजन, टॉय आर्टिजन देख के आप 18 ट्रेड्स याद कीजिए? नहीं करना है, क्योंकि वो याद ही नहीं होंगे. इट्स अ इम्प्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन. और वही चीज हम आपको सेशन में भी बताते हैं. ट्राई टू थिंक प्रैक्टिकल इन अ स्कीम. And if you are thinking practical, you can easily give me the answer. That answer will be option number C, 1 and 2, because government servants are not a part here. Now let's come to the next important thing here. ठीक है जी, that is National Overseas Schemes for Scheduled Caste, which is the sub scheme of the umbrella scheme Shreyas here. ठीक है. अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा, पर्सन इज विलिंग टू डू PhD फ्रॉम लंदन. हमें पता था कि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपको जो भी श्रेय स्कीम के अंदर स्कॉलरशिप्स मिलते हैं वो इसीलिए मिलते हैं अगर आप इंडिया के अंदर काम कर रहे हो. फॉर दी स्कॉलरशिप फॉर इंडियन इंस्टीट्यूशंस. तो ये पहली स्टेटमेंट वहीं से गलत होगी कि बाहर का इंस्टीट्यूशन है तो गलत हो जाएगा. सेकंड इज एन अंडर ग्रेजुएट प्रोफेशनल हुज एनुअल इनकम इज ₹7.5 लाख. तो 8 लाख से कम इनकम होनी चाहिए आपकी. ये वाला स्टेटमेंट सही है. अ पर्सन विलिंग टू परस्यू मास्टर्स इन साइंस, दैट इज एब्सोल्युटली राइट, बिकॉज इट इज बेसिकली गिवन फॉर दोज पर्संस हु आर ट्राइंग टू परस्यू दिस ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन. बेसिकली कहाँ पे, अगर आप इनोवेटिव कल्चर में कर रहे हो, साइंस में कर रहे हो, तो बिल्कुल सही है. It's about the eligibility criteria, and this is where the answer is option number C, 2 and 3. Now here guys, if you understand from these questions, the important point for you to note down here is, जब भी आप गवर्नमेंट स्कीम की बात करते हो, बहुत बच्चे क्रैम कैसे करना है, रट्टा कैसे मारना, उसके बारे में सोचते हैं, जो कि रिक्वायरमेंट ही नहीं है इस एग्जाम की. इस एग्जाम में एक ही रिक्वायरमेंट है कि आपको चीजें कितनी समझ आ रही है और कितना बेटर आप अंडरस्टैंड कर रहे हो. चाहे वो आप ARD स्टैटिक की बात करोगे, चाहे वो आप ARD करंट अफेयर्स की बात करोगे, चाहे वो आप ESA करंट अफेयर्स की बात करोगे. अगर आप चीजों को समझ रहे हो और समझते समझते यू गेट अक्रॉस अ पॉइंट के ये तो पार्ट ऑफ द स्कीम है, कोर ऑफ द स्कीम है, मुझे पता होना चाहिए, यू कैन गेट द आंसर्स. दिस इज व्हाट इट इज बीइंग सेड हियर, दिस इज व्हाट यू कैन सी फ्रॉम हियर आल्सो. ठीक है जी. अब आते हैं अगला क्वेश्चन. यार ये तो मुझे लगता है सबसे आसान क्वेश्चन था. मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज. पंचायती राज इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग मेंशन्ड इन द सिलेबस, और नाबार्ड अपने सिलेबस से बाहर नहीं भागता है. लुक एट द क्वेश्चन. डैश एम्स टू प्रोवाइड द रिकॉर्ड ऑफ राइट्स टू विलेज हाउसहोल्ड्स ओनर्स possessing houses in inhabited areas called the abadis in some state with legal ownership, that is यहाँ स्वामित्व स्कीम में सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि आबादी एरियाज भी यहाँ पे कवर होते हैं. दैट इज फ्रॉम स्वामित्व स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज. फिर आ जाता है जी बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे में क्वेश्चन पूछा गया था, विच अमंग द फॉलोइंग प्रोग्राम हैज बीन अनाउंस्ड विद एन आउटले ऑफ 2200 crore rupees to boost the quality planting material. The initiative name was Atmanirbhar Bharat Horticulture Clean Plant Program that was unveiled during that year's यूनिट बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे. तो बजट भी हमें यहाँ पे पढ़ना है. अगला क्वेश्चन है जी, विच स्कीम एम्स टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू स्ट्रीट वेंडर्स टू रिज्यूम देयर लाइवलीहुड्स एंड हेल्प देम बिकम सेल्फ रिलायंट? पीएम स्वनिधि स्कीम. अब मैं आपको यहाँ से दो चीजें बताता हूँ. आई होप यू माइट हैव वॉच्ड द वीडियो ऑफ 2020 फॉर एग्जामिनेशन ऑल्सो. हैव यू वॉच्ड द डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन ऑफ दैट? देयर वाज अ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन व्हिच इज आई थिंक इट वाज अ 10 मार्क क्वेश्चन जहाँ पे दो स्कीम्स पूछी थी, पीएम स्वनिधि स्कीम, पीएम विश्वकर्मा स्कीम. They have asked you a descriptive question. तो इसका मतलब जो स्कीम्स आपको पुराने पेपर्स में दिख रही हैं या जो न्यूज में दिख रही हैं, उनको सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर नहीं करना, आपको उनको डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रिपेयर करना है. ठीक है. सो दिस इज समथिंग यू हैव टू लर्न फ्रॉम दिस एग्जामिनेशन. यही ऑब्जेक्टिव भी था. तो इफ वी सी ओवरऑल, इफ आई एंड शामली कंक्लूड दिस पॉइंट हियर, द पॉइंट हियर इज गाइस, इट्स नॉट इट ऑब्वियसली इन द ईयर ऑफ 2023 इट वाज अ मॉडरेट लेवल पेपर, इट वाज नॉट एन इजी पेपर. ठीक है जी. बट मैं ये नहीं कहूंगा कि अगर आप 23 से 24 में जंप करोगे तो ऑब्वियसली कुछ शॉकर्स आपको देखने को मिले जो कि यहां से स्टार्ट हुए थे. मैं एग्जांपल देता हूं. फर्स्ट पॉइंट, PACS पे पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है. इससे पहले कहीं भी एग्रीकल्चर करंट अफेयर पे पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन हमने 23 से पहले बहुत कम देखे थे. तो फुल फ्लेज पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है जो कि 2024 में भी आए, नाबार्ड की स्कीम्स भी आए. अब वो क्या था, पूरा क्वेश्चन नहीं आया. इट वॉज अ मिक्सचर ऑफ ARD करंट अफेयर्स एंड ARD स्टैटिक. यू कैन विटनेस इन 2024. तो यहां से वो चीज स्टार्ट हुई थी. अब 2025 में भी आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो. कमिंग टू द क्वेश्चंस दैट इज ऑन स्कीम्स दे आर आस्किंग, ऑब्वियसली नाउ
2020 अगर मैं 4 की बात करूं तो वहां पे स्कीम्स का लेवल डिफिकल्ट था बिकॉज कहीं ना कहीं ईएसआई स्टैटिक कॉमिक्स की है। तो अब ये एग्जामिनेशन कैसे इवॉल्व हो रहा है जहां पे आपको स्टैटिक और करंट दोनों का रिलेशन बनाना आना चाहिए। PSCS is obviously a static part, but obviously when it is seen in news, it becomes a topic of current affairs also. With respect to ARD setting, I think Shamli ma'am will be concluding, and then before we leave you, we have something special for you, and then we will wrap up the session, guys. Okay, so before I talk about the trend of ARD static, I wanted to make one correction. So I think मैंने शायद saline soil का pH, electrical conductivity less than 4 बोल दिया था, but it's more than 4, right? For sodic soil, it is less than 4. So do make that correction here. But now let's talk about the trend of ARD static. So students, earlier the questions from ARD static in your phase 2 were very direct, but from 2023 onward we have seen that there are some questions which are in depth in nature, means require in depth knowledge of agriculture. So अब ये नहीं बोल सकते कि आप सिर्फ बेसिक एग्रीकल्चर पढ़ के फेज 2 का एग्जाम क्लियर कर सकते हो, स्पेशली ऑफ ARD static. That requires a core agriculture knowledge. So now what to do in that case? So students, in that case, whatever topic you are picking, whatever topic you are reading, please try to read in that topic in a quite detailed manner, and also try to understand the concepts. When you know the concepts, it become easy to answer the question. Okay, you can yourself assume that what can be the correct or the incorrect options. So please try understand concept, try to read a little bit in deeper manner, right, or in depth manner of that particular topic, right? So that is what we take a learning from 2023 examination. Same was seen in 2024, as we have not expected ARD current affair questions that were paragraph based in before 2023, but in 2024 again there were more questions from ARD current affair, and so, right? So this will be your learning for coming examination. So do not take any portions lightly, be it your ARD static, be it your current affair, be it your ESI current affair, which is obviously a very important part of ESI. So everything is very important. You have to take everything very seriously, right? Now we'll discuss about the difficulty level of each topic. I think यहाँ पे हम बस बहुत quickly rush up करेंगे, ठीक है ना? So this is how we have started. This is what you have said you also. Yeah. This is how the difficulty level of paper was. So obviously, if I say guys, it's a moderate level paper. I'm not saying it was an easy paper because 25 में आके मैं आपको बोलूँ कि 23 का पेपर आसान था, तो यार उस टाइम पे वो भी मुश्किल ही था, इतना आसान तो नहीं था. But it was a moderate level paper. It's not a difficult level paper. I think she will also agree with me. Yeah, sir, I would like to add that there will be few questions which will be of difficult nature, because थोड़ा सा एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल भी सेट करना होता है. सो कुछ क्वेश्चंस तो रहेंगे बहुत डिफिकल्ट, जो अगर आपको पता है तो आप आंसर करोगे, अदरवाइज यू विल लीव इट. बट देयर विल बी मोस्टली मॉडरेट लेवल क्वेश्चन, इजी टू मॉडरेट लेवल क्वेश्चन which can be easily answered, and that can be easily correct opted by you. So we'll now, ठीक है. अगर मैं आपसे एक चीज, सॉरी मैम को एक बात बोल रहा हूँ, एक चीज मैं आपसे जरूर बोलूंगा दोस्तों यहाँ पे कि इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू टू अंडरस्टैंड इज, अगर पेपर डिफिकल्ट होगा तो यार वो सबके लिए होगा, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ आपके लिए होगा, वो सबके लिए होगा. बट पॉइंट यही यहाँ पे समझाने का ये है, अगर आपने जो चीजें उस टाइम, क्योंकि देखो गवर्नमेंट स्कीम्स न्यूज में थी, करंट अफेयर्स न्यूज में थे, तो दैट इज हाउ आई एम सेइंग कि द पेपर इज ऑन अ मॉडरेट लेवल. आपने पढ़ा है तो आप कर लोगे, ऐसा भी नहीं था कि नहीं कर पाओगे. ऑब्वियसली मैंने नरेगा का क्वेश्चन पूछा है कि वो ग्राम रोजगार दिवस का क्वेश्चन मुश्किल आया, तो वो यार ठीक है 2 मार्क आएगा. मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, नाबार्ड की टेंडेंसी, अगर वो आपका 50 मार्क्स का पेपर है ना, तो उसमें से अराउंड 40 to 42 मार्क्स पे ही खेला जाता है. इफ यू आर गुड स्टूडेंट, think about 40 marks. Never think about the whole 50 marks paper, because obviously there will be 2 to 3 questions in ARD static which will be somehow out of the box. कुछ एक आधा करंट अफेयर में भी ऐसा पक्का हो जाएगा कि कुछ आउट ऑफ द बॉक्स ही आ जाएगा. तो वो 8-10 मार्क्स का बफर आपको रखना है कि ऐसा होगा. तो शॉक मत हो जाना कि सर 50 में से 10 मार्क्स का पेपर तो आउट ऑफ द पेपर ही आ गया. तो वो होता है यार, ठीक है ना. अब अगर हम आपको ओवरऑल ले, तो एक चीज मैं आपको बताता हूं जो आई थिंक वी हैव ऑब्जर्व फ्रॉम दिस ईयर इज, कहीं ना कहीं ESI ARD दोनों की ही जो वेटेज है पिछले 2-3 साल से वो इक्वल ही है. वो एक आधा क्वेश्चन आपको मिला, जैसे यहाँ पे ARD क्वेश्चन थोड़े से बढ़ गए, 24 में थोड़े से ESI क्वेश्चन बढ़ गए थे. अब ESI स्टैटिक भी आया था बीच में 24 में, तो यहाँ पे नहीं आया था, 24 में स्टैटिक भी आया था. तो इसका मतलब ये नहीं कि 23 से आपने लर्निंग लेके स्टैटिक छोड़ दो, नहीं. पढ़ना है, नहीं आएगा तो आपकी अच्छी किस्मत है, बट आपको करना तो है जो भी चीजें रिलेट कर रही हैं. ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो बैलेंस हमने आपको बता ही दिया है. This is how the difficulty level was there. So 20 marks of paper was really easy. 24 marks of paper was that thing that totally depends on your level of preparation. If you are a good, तो 24 में से आई थिंक 17-18 नंबर आप ले लोगे.
लिए होंगे आपने, ले लोगे ना, लिए होंगे आपने। और 6 मार्क्स का पेपर ऑब्वियसली ऐसा था कि जो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत नया था या किसी को नहीं पता था। अब एक चीज मैं और बता रहा हूं, बिकॉज जैसे मैंने आपको बोला था पेपर अक्टूबर में और पीएससीएस दिसंबर में आता, तो आपके मन में पक्का डाउट आने वाला है कि सर क्या मुझे 1 साल पुराना करंट अफेयर पढ़ना है? करंट अफेयर आपको पुराना नहीं पढ़ना है। द थिंग इज, जो चीजें न्यूज में चल रही हैं आपको उसके बारे में अच्छी तरह पढ़ना है। अगर पीएससीएस सितंबर में भी न्यूज में था तो आपको पूरा पता होना चाहिए कि पीएससीएस के बारे में क्या क्या हुआ है पिछले कुछ मंथ्स। दिस वाज द थिंग हियर। ठीक है जी, तो ये था दोस्तों हमारा एनालिसिस। ये हमने आपको मार्क्स भी बता दिए, कितने क्वेश्चंस कहां से आए हैं, कैसे थे। स्कीम्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि सारी स्कीम्स जो थी वो लेटेस्ट स्कीम्स ही थी जो कि आपके एग्जाम में पूछ। Hello everyone, welcome to EduTap. We all know that previous year papers play a very important role with respect to the preparation for any examination including NABARD Grade A. So as a part of this session, we are going to analyze the NABARD Grade A 2024 previous year paper. It will help us to understand the difficulty level, and we will also use this paper to understand that how we can optimize our strategy with respect to NABARD Grade A 2025. Back to the video. Let us talk about this previous year paper, and before we begin that, let me tell you the main objective. The main objective is basically to tell you that what type of content you could have written in an organized manner, fine, and secondly, very importantly, what was the difficulty level of this question and how we are going to analyze the difficulty level. We will try to analyze the difficulty level by knowing the source with respect to that question, क्योंकि अगर क्वेश्चन का जो सोर्स है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, अगर कुछ न्यूज में चल रहा था, बहुत ही रैंडम सोर्स है, so of course the question is difficult to handle. But if the question is very much straightforwardly from the syllabus, then I would say the job becomes easier. So we will see all these things as a part of this video, and let us move on to the question number 1. Fine. And this document, by the way, you can download this document from the Telegram channel. We are going to share it over there. So let me open the question number 1. And the question number 1 is, what are the benefits of post-harvest management, value addition and supply chain development in horticultural crop? And the question is a 15 marker question. Now, first of all, let us see the difficulty level. I would categorize this question as a moderate to easy type of question. And even if not easy, even if we call it moderate, because the question was a bit lengthy, you had to answer 3 type of things. The first is the benefit of post harvest management, then the value addition and the supply chain development in horticulture crops. So 3 bodies you had to create. So that's why I would say the question was a bit lengthy, but I would say the content that had to be written as a part of this question was very easy. Why is it so? Because this question straightforwardly has been asked from the syllabus. You can see I pasted a screenshot over here. This screenshot I've taken from the syllabus only, and you can see that post harvest management, value and supply चेन मैनेजमेंट ऑफ प्लांटेशन एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप. तो क्या ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट था आंसर करना? बिल्कुल भी नहीं. ठीक है, डिफिकल्ट क्वेश्चन हम उसे कहते हैं जो बहुत कुछ आउट ऑफ द बॉक्स आ जाए, जो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड टाइप क्वेश्चन हो. बट वो क्वेश्चन जो डायरेक्टली आपसे सिलेबस से पूछा जा रहा है, वो सिलेबस का कीवर्ड्स यूज करके, दैट शुड बी एन एडवांटेज फॉर यू, नॉट समथिंग दैट इज डिफिकल्ट और चैलेंजिंग. सो that is why I'm categorizing this question as easy to moderate level. Fine. Now if you see the model answer, now see the purpose of this session is not to provide you knowledge कि यार horticulture crop क्या होती है, post harvest management के benefit क्या होते हैं. That is not the purpose. Because ultimately you can download this document and you can read it later on. But the main purpose is to discuss, is to analyze how you can basically structure this information. So of course, in order to answer this question, first of all, you are going to write some contribution with respect to the horticulture sector, fine, as a part of our agriculture. So you can use any kind of data in order to justify that information. So you can see, as it is written over here, that horticulture contributes around 30% of India's agricultural GDP, with India being the second largest producer of fruits and vegetables in the world as per Food and Agriculture Organization 2022, FAO 2022. Now the thing is that you might feel that this information is a bit lengthy. I mean, this introduction looks a bit lengthy, but let me tell you that the document has been written by keeping in mind that so that you get a good content with respect to the answer. The word limit has not been considered as a primary criteria. So of course, when you are writing this answer in the real examination, you will have to deduct few words so that basically you can fit it into the right word limit. Fine. So that is the idea. But you can see this is the first and the foremost thing, that is the introduction, where you can write some form of data. After that, of course, 3 things have been asked. That is the benefits of post harvest management, then the value addition and the supply chain development. So of course they are going to be 3 bodies. Fine. So the first body is going to be benefits of post
post harvest management, the second body is going to be benefits of value addition, and the third is going to be benefits of supply chain development. अब एग्जाम में मुझे पता है इतने सारे पॉइंट्स नहीं आते, इतना सारा डेटा भी याद नहीं आता है, बट कोई बात नहीं, कोशिश करो कि अगर हर चीज के लिए अगर आप 3 पॉइंट भी लिख रहे हो, हर बॉडी के लिए 3 पॉइंट भी लिख रहे हो, कोशिश करो 3 में से 2 में डेटा डाल दो या फिर 1 में डेटा डाल दो और किसी एक में एग्जाम्पल डाल दो, बट ट्राई टू एड सम वैल्यू एडिशन. फाइन, डू नॉट राइट एन इनकम्प्लीट और आई वुड से generalized version of an answer. Try to make it complete by using the selective keywords. So for example, you can see according to National Horticulture Board, India loses India loses close to rupees 50,000 crore annually due to post harvest losses in horticulture sector, and it is so that basically shows the benefit of post harvest management with which we can deal such a type of problem. Fine, so similar type of, you can see here we have added an example that the shelf life of mangoes can be extended, and extension of shelf life. So all such sort of things can be written, and this is how you can basically structure your answer by using the right keywords. And at the end, of course, what you can do, you can write the conclusion also, a very short and precise conclusion, and I would say try to write a futuristic conclusion, a conclusion that contains some sort of way forward, that what could be the future measures that can be taken in order to improve the horticulture sector with respect to India. So you can write something like that. Fine. And was it covered as a part of EduTap course? Yes, it was covered, though I have removed the screenshot from this because I would say that is not the primary purpose of this session, but in the original document we had pasted a screenshot too. Fine. So now let us मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब फर्स्ट क्वेश्चन से हमें क्या लेसन मिल रहा है कि यार सिलेबस तो बहुत इंपॉर्टेंट है. ये सबसे इंपॉर्टेंट लेसन आप ले सकते हो फर्स्ट क्वेश्चन से कि सिलेबस को किसी कीमत पे नहीं छोड़ना है. एक एक कीवर्ड, each and every keyword that is written as a part of the syllabus, you have to cover it. You cannot compromise with the syllabus. Fine, it is very important, it is extremely important, so please prioritize syllabus. That should be the first and the foremost priority as a part of your preparation. Let us move on to the second question and we will see what is the key takeaway with respect to this question number 2. Now the question number 2 is, India has seen a financial inclusion transformation from 2014 to 2024. What are the key government initiatives and the outcome of their efforts? अब मैं बताता हूँ ये क्वेश्चन इजी क्यों था. ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हो सकते हैं जिन्हें फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में डिटेल में ना पढ़ा हो. ठीक है, वो इस क्वेश्चन को छोड़ भी सकते थे क्योंकि 4 में से 6 क्वेश्चन करने होते हैं आपको एग्जामिनेशन में. फाइन, बट if you talk about that whether you could have answered this question or not, I would say definitely yes. Why is it so? Because if you see the last year paper of 2023, a similar type of question was asked with respect to financial inclusion over there. Fine. So you can see the value of India's score in RBI's financial inclusion index has increased in 2023. In this context, discuss the challenges to financial inclusion in India. And while understanding the previous year question, what is the biggest lesson that you can take? That if a certain question has been asked from a certain theme, then you have to cover that theme in a holistic manner, so that if any question gets repeated from that certain theme or from that certain area, you are in a position to answer that question. Fine. So that is, I would say, one of the most important things that you can do, and you have to follow that approach for the 2024 paper also in order to prepare for the 2025. अब 2024 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आपको उन्हें एनालाइज करना है, उन certain themes को recognize करना है, and you have to make sure that you are preparing that area in a holistic manner, in a proper manner, so that if here and there if the question is asked from that area, you are in a comfortable position to answer it. Fine. So you can see it over here. The question was regarding financial inclusion, and a similar type of question was asked in 2024 also, though the approach of the question is different, but I would say the theme is same. So I would say not a difficult question to answer at all. Fine. And if you are somebody who is following our YouTube initiative Perspective 360 degree also, where we do current affair based answer writing practice, you can go and see the playlist. We had covered this question. Fine. Financial inclusion. तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत रैंडम क्वेश्चन था, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप बैंक्स के बारे में, रूरल इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ते ही हो. ठीक है, as a part of your preparation, you covered this economic survey also sort of thing. So I would say if you had covered in a dedicated manner, you would have a good fodder material to answer this question. Fine. So you can see the approach with respect to this question is going to be pretty much straightforward. First of all, you're going to write something about financial inclusion. Fine. Since the question is asking about transformative shift from 2014 to 2024, so you are going to write your, I would say, introduction accordingly. After that, of course, you are going to switch to the main body, that is the key government initiatives that have been taken, and you can write them, and then you can talk about the outcomes of the financial inclusion efforts. Fine. Because the question is asking what is the key initiative and the outcome, so two things have been asked. So
do not think that just because key initiatives and outcome have been asked, so you are going to create just one body and then you will write some sort of, I would say, content under it. I would say your answer would appear incomplete, because you won't be able to answer the question in a very precise manner. The demand of the question would not be completely addressed. So it is very important that you are creating two bodies. The first is initiatives that have been taken from 2014 to 2024, and what is the outcome of these efforts. Fine. So you can see this is body part 1, the key initiatives, for example, Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, Aadhaar enabled payment system, Mudra Yojana, Digital India initiative, Jan Suraksha scheme, also sort of things. Then you can write the outcome कि यार उसका outcome आया. अब प्रधानमंत्री जन धन योजना आ गई तो क्या हुआ? What is the outcome? Number of banks account. Fine. So bank account जो है वो increase हो गई है. There has been increase in the bank account penetration. अब bank account penetration increase होगी तो क्या होगा? लोग अपना पैसा जमा करेंगे. Financial inclusion होगी. Fine. People will be able to save more. Fine. And it will help to and when more and more people are associated with the banks, what is going to happen? It becomes easier for the government to provide better delivery of the schemes such as DBT. Fine. Also sort of things. So the scheme targeting becomes better and it will help to reduce poverty, vulnerability. ठीक है, डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ेंगी. अब बिजनेसमैन है वो भी लोन ले सकेंगे because they now they have opened their accounts, so the small businessmen are there, they can avail the loan. So that is also another outcome. So in such a similar fashion you can write different type of outcomes as a part of it. Fine. You can see insurance also, empowerment of women or marginalized groups. So all these are nothing but these are the outcomes of this above initiatives. So अगर initiative एक बार लिख दिए तो खुद एक बार सोच के देखो कि यार इस initiative का क्या फायदा होगा, तो आपको खुद दिमाग में आ जाएगा. और कुछ डेटा यूज करो, कुछ एग्जांपल यूज करो and write the body part 2. I hope it is clear to all of you. Fine. Now let us move on to the question number 3. अब इस क्वेश्चन से हमें क्या take away mila? The main lesson from this question is that please go through the previous year question before appearing for the examination, and you have to identify that from which areas what type of questions were asked, and accordingly you can prepare those areas in a holistic manner. अब मैं ये नहीं कह रहा कि आपको सिर्फ वही पढ़ के जाना है, बट जो चीज़ें पढ़ के जानी है उनमें से ये एक ऐसी चीज़ है जिसको आपको ज़्यादा अच्छे से करना है. ठीक है, ताकि क्वेश्चन अगर रिपीट हो तो कोई भी ऐसा चांस ना हो कि आप उस क्वेश्चन को अच्छे से ना लिख पाओ. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर एनालाइजिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एंड ट्रस्ट मी इट विल हेल्प यू टू आंसर or to optimize your preparation in the most effective manner. Let us move on to the question number 3. अब यहाँ चलते हैं. Question number 3 is, okay, was the previous question covered by EduTap? The answer is yes, it was covered in the ESA chapter number 23 in a very precise manner. Now let us move on to question number 3. What is the institutional rural credit framework in India, and what measures can be taken by the government to improve rural credit access? अब ये कितने का है? 15 मार्कर क्वेश्चन है. ठीक है, अब 15 मार्कर क्वेश्चन है तो अच्छे से हम डिटेल में लिखेंगे, बट उसको जानने से पहले let us see that how in what category we can categorize this question. Was it easy, moderate or difficult? I would categorize it again under the easy to moderate category. Why is it so? Because if you have covered the syllabus in a detailed manner, you could have easily answered this question. You can see rural banking and financial institution in India is something that is a part of the syllabus. और यही आपको इस आंसर में लिखना था. ठीक है, कि कैसे गवर्नमेंट ने डिफरेंट इनिशिएटिव्स लिए ताकि रूरल क्रेडिट एक्सेस इंप्रूव हो पाए. फाइन. फॉर एग्जांपल ओपनिंग ऑफ, आई वुड से, these cooperative banks, for example promotion of differentiated banks, for example the small finance banks, fine, the payment banks, different kind of banks that are there. So you had to write these things as a part of the answer to this question. Fine. So I would again categorize it as a easy to moderate type of question, because same mantra यहाँ भी follow हो रहा है. कुछ ऐसा नहीं है कि out of the box question आ गया. अब ये मत सोचना कि यार सर तो सब कुछ इजी और मॉडरेट में डाल रहे हैं, डिफिकल्ट में कुछ डाल नहीं रहे. अब नहीं है तो मैं क्यों डालूं? मैं डिफिकल्ट में उस चीज को डालना पसंद करूंगा जो मुझे सच में लगेगा कि यार ये बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स है, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड आ गया, स्टूडेंट इसको प्रिपेयर नहीं कर सकता था और बहुत चैलेंजिंग था, बट ये चीज तो डायरेक्टली सिलेबस से पूछी जा रही है. तो इट डज नॉट मेक एनी सेंस if I'm adding this question as a part of difficult level question. Fine. Now let us see the answer to this question. So since the question is asking about the institutional credit framework, fine, institutional rural credit framework, तो आप उस credit framework की importance लिख सकते हो, that what is the importance of that. So you can talk about that it acts as a backbone of the Indian economy, employing over around 55% of the workforce. Fine. And this is also another, I would say, lesson that you can take. What you can do basically,
the different areas that are there as a part of the syllabus, the different components that are there, the keywords that are written as a part of the syllabus. You should try that. You should have at least 1 to 2 data points for most of them. When I say most of them, क्योंकि हर चीज के लिए डेटा कलेक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट मैक्सिमम चीजों के लिए आप कुछ ना कुछ डेटा रखो. ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी टॉपिक आप कवर कर रहे हो, तो एक दो डेटा याद रखो कि यार, और कुछ डेटा कुछ इस तरह का याद रखो कि जो मल्टीपल टॉपिक्स में यूज हो जाए. ठीक है, तो एक डेटा है जो टॉपिक एक्स में भी यूज हो रहा है, अगर टॉपिक वाई से भी क्वेश्चन आ जाए तो उस डेटा को वहां भी हम एडजस्ट कर सकें. तो जैसे ये है कि जो रूरल the institutional rural credit framework, it employs around 55% of the workforce. If you had such type of data, you could have easily added as a part of your introduction. Then let us talk about the first part of the body, that is institutional rural credit framework in India. Then the commercial bank, rural bank, cooperative banks, fine. Then NABARD, microfinance institution. ये क्या आ गया आपका first part of the body, because this is something that is asked, that what is institutional credit framework in India, what measures have been taken by the government to improve it. Fine. So you are writing that this is the institutional rural credit in India. What does it include? It include all these different type of banks, which ultimately you know that you cover it as a part of your syllabus in your rural banking. Then you can write that क्या measures लिए हैं अभी, तो measures लिख दो. Very easy to understand, fine, very easy to write. For example, Kisan Credit Scheme, then interest subvention scheme, Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, then strengthening cooperative credit structure, for example, creation of the National Cooperative Development Fund, then the expansion of regional rural bank. You must have heard that very recently government amalgamated few regional rural banks also. आप चाहो तो वो भी लिख सकते हो, ठीक है, ताकि उनकी performance improve की जा सके. So different initiatives we all know taken by the government in order to improve this banking system, in order to improvise the rural credit framework. Fine. So you could have written all these initiatives as a part of it. And lastly, what does it come? You can also talk about the outcome of the government measures. So I would say this is pretty much optional, because if you don't have the space, if you don't have the time, then you can avoid it. But as I told you, that we have tried our best to make the answer holistic so that you get a good content regarding it. Fine. So that's why we have written it. Otherwise, I would say, since this has not been asked as a part of the question, so either you could have written it in a very precise manner, in a very shortened manner, or what you could have done, you could have skipped it if the time is not in your favor. Fine, if you're running out of time. And at the end, what you can do, of course, you can write the conclusion with respect to it. So that is how you could have answered this question. And what is the key takeaway? The key takeaway is that, first of all, कि syllabus again बहुत important है, बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते. सिलेबस किया है तो सब कुछ किया है, ठीक है. दूसरी बात ये है कि कुछ चीजों के लिए डेटा कलेक्ट करके रखो. अब मैं ये नहीं कह रहा कि हर पॉइंट में डेटा जाके लिख देना है, वो पॉसिबल ही नहीं है. कोई भी जाएगा एग्जामिनेशन में, चाहे वो टॉपर क्यों ना हो जो सिलेक्ट हो चुका है. इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनीवन टू राइट डेटा फॉर ईच एंड एवरी पॉइंट. यू कैन नॉट डू दैट, बट यू हैव टू add data in most of the points. For example, 5 पॉइंट लिख रहे हो तो 2 में डाल दो, ठीक है, 2 या 3 में डाल दो, 3 में नहीं आ रहा तो 2 में लिख दो, 1-2 में एग्जाम्पल लिख दो. द मेन पॉइंट इज दैट योर आंसर शुड नॉट साउंड generalized. It should look specific. It should have some sort of value addition. That is the main point. Fine. Now let us move on to the next question. Question number 4. What are the objectives and the aims of Pradhan Mantri Vishwakarma and Swamita scheme? अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं. स्कीम ओरिएंटेड क्वेश्चन आया. Now a lot of students keep on asking me that what parameters should be considered while selecting a certain type of scheme in order to prepare for the examination. Now the thing is that I usually suggest 2 type of parameters. The first is that the scheme should align with your syllabus. ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स स्कीम आ गई है. मान लो स्पेस मिनिस्ट्री ने कोई स्कीम निकाली, ठीक है, अब स्पेस मिनिस्ट्री नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने कोई स्कीम निकाली, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की स्कीम आपके डिस्क्रिप्टिव के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगी, बिकॉज इट इज नॉट समथिंग दैट इज देयर precisely as a part of your syllabus. ठीक है, अब मान लो for example a scheme is there with respect to agriculture ministry, fine, or maybe by ministry of environment, fine, a certain type of scheme is launched. So what you can do, since the scheme is aligning with your syllabus, so you have to prepare it. The second parameter, now this is the first parameter, which is the syllabus. If it is aligning with your syllabus, then it becomes important. The second parameter is the impact factor. What do we mean by impact factor? The impact factor means that when a certain scheme is launched, it has a huge impact either in that certain sector or in the economy or with respect to the society, that is with respect to women or maybe with respect to the marginalized section of the society, the vulnerable section of the society. Such type of huge impact factor is there. तो जिन schemes का बड़ा impact factor होता है और जो आपके syllabus से align करी, आपको उन्हीं को prepare करना है. जो छोटी मोटी स्कीम गवर्नमेंट लॉन्च करती है जिनका बजट भी बहुत कम है, ठीक है, और
बहुत ही आई वुड से छोटी स्कीम्स है, बहुत ही इतनी इंक्लूसिव भी नहीं है, इम्पैक्ट फैक्टर बहुत कम है. यू कैन आई वुड से यू कैन skip those schemes for the descriptive paper, or if you want to stay at the safe side, you don't want to skip it, so what you can do, you can have some kind of minimum information with respect to the schemes. ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बस पता होना चाहिए कि स्कीम किस बारे में है. फाइन, व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड दैट स्कीम, ताकि अगर क्वेश्चन आ भी जाए तो ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल ही छोड़ दो उस चीज को एंड यू आर टोटली अनकंफर्टेबल. दैट शुड नॉट हैपन. यू आर एबल टू जनरेट सम इंफॉर्मेशन, बट द मेन थिंग इज दैट इफ यू वांट टू रीड अ स्कीम इन अ डिटेल मैनर फॉर द डिस्क्रिप्टिव पेपर, then these two things have to be considered, the syllabus and the impact factor. And you can see पीएम विश्वकर्मा बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, स्वामिता बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है. इन दोनों में से ऐसी एक भी स्कीम नहीं है जो बहुत ही ऐसे छोटी सी स्कीम हो एंड जो इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसका इम्पैक्ट फैक्टर कम है. और आप कोई भी एग्जाम ले लो, चाहे आरबीआई का एग्जाम लो या नाबार्ड का एग्जाम लो, दीज टू थिंग्स हैव टू बी कंसिडर्ड. फाइन. नाउ let us say if you do not know the answer to this question, then what you can do, you can safely skip it, because you had to answer 4 out of 6 questions only. ठीक है, 4 में से 6 क्वेश्चन आंसर करने थे, तो आप आराम से इसे स्किप कर सकते हो and you could have answered some other question as a part of the descriptive paper. Now let us see that how can we answer it, and इसको आंसर करना मुझे लगता है कि इसका स्ट्रक्चरिंग समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, because straightforwardly बहुत ही आई वुड से दो चीजें पूछी है इसमें. द फर्स्ट इज ऑब्जेक्टिव एंड द सेकंड इज द एम. फाइन, द एम एंड द ऑब्जेक्टिव विद रिस्पेक्ट टू दिस स्कीम. अब दोनों का मतलब सेम ही है ऑलमोस्ट, बट द थिंग इज दैट यू द क्रक्स इज दैट बेसिकली यू हैड टू राइट द फीचर्स ऑफ दिस स्कीम. यू डोंट हैव टू टॉक अबाउट चैलेंजेस एंड ऑल दोस थिंग्स. लेट अस से, अब देखो ठीक है, एक और चीज देखते हैं. लेट अस से द क्वेश्चन इज व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द पीएम विश्वकर्मा. बस इतना क्वेश्चन आता और ये 10 मार्कर का क्वेश्चन होता. ठीक है, अब 10 मार्कर के क्वेश्चन में अगर पूछा हुआ है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्कीम, और आपको लग रहा है कि यार मुझे तो इतने ऑब्जेक्टिव या फीचर नहीं आते, मुझे नहीं पता इतने फीचर क्या है, मैं 2-3 फीचर जानता हूं और मुझे नहीं लगता कि मैं उसका वर्ड लिमिट पूरी कर पाऊंगा नहीं, तो देयर यू हैव टू एक्ट स्मार्ट. फाइन, इफ यू थिंक दैट यू वोंट बी एबल टू कंपनसेट फॉर द वर्ड लिमिट, देन ओवर देयर यू कैन एक्सटेंड द इन्फॉर्मेशन, यू कैन स्ट्रेच द इन्फॉर्मेशन बाय राइटिंग अदर थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल, यू कैन राइट द चैलेंजेस ऑफ पीएम विश्वकर्मा. ठीक है, अगर किसी चीज को आपके फीचर्स पता है, सो यू कैन जनरेट द चैलेंजेस ऑल्सो. फाइन, फॉर एग्जाम्पल लैक ऑफ फंड्स. ठीक है, लैक ऑफ फंड तो हर स्कीम में लिखा जा सकता है कि यार इस स्कीम में फंडिंग कम है तो फंडिंग बढ़ा दो, तो ये तो हर जगह लिखी जा सकती है. इस तरह तरीके से आप पॉइंट्स क्रिएट कर सकते हो सो दैट यू कैन राइट द चैलेंजेस एंड द सॉल्यूशन आल्सो. बट यहाँ पर वो लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन 10 नंबर का है सिर्फ, और 10 नंबर में 2 स्कीम्स पूछी हुई है, स्वामिता के बारे में भी लिखना है, विश्वकर्मा के बारे में भी लिखना है. सो 10 नंबर में ये 2 चीजें कवर हो जाती है. अगर यही क्वेश्चन 15 नंबर का होता तो तब मैं आपको बोलता कि हाँ, now you don't have enough words to write under the features of these schemes, so you can of course choose to write the challenges also, or maybe the solutions also with respect to the challenges, but in a very precise and accurate manner. ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा उसको explain कर रहे हैं, तो वो depend करता है कि question कितने marks का है. So based on that you decide that what type of content you have to write. So over here you have to be very precise, you cannot beat around the bush. तो सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन लिख दो जहाँ पर आपने पीएम स्वामिता एंड विश्वकर्मा की छोटी सी हेडिंग दे दी. यू हैव रिटन दैट व्हाट दिस स्कीम इज ऑल अबाउट. दीज आर द की प्रोग्राम्स दैट एम टू एनहांस द लाइवलीहुड ऑफ the traditional artisans and ensuring property rights in rural India respectively. Fine, so you can write the primary objective of this scheme, then you can write a detailed objective or the detailed features कि यार क्या क्या चीज़ें आती हैं इसमें. So the objective is to empower the traditional artisans, then it provides the financial support to artisans, then skill development, cultural heritage, expanding market access. Similarly for the Swamita also, that establishing property right in rural areas, reducing land disputes, enabling access to credit, strengthening rural governance, and use of modern technology, because we know that Swamita scheme uses drones also. Fine, for the survey, so that is also can be written as a part of it. And at the end, what you can do, you could have written the conclusion over there. And if you have followed the EduTap sources, then we have covered this as a part of our Scheme Tab magazine and July and August, and we have covered it in a very precise manner. Fine, so that is the idea. That is how you what is your learning from this question? The learning is that how to select the scheme. I've told you 2 type of parameters. The first is basically to see the syllabus, whether it is aligning with the syllabus or not, and the second is the impact factor. And the next thing that we have learned, that try to answer the question in a precise manner, write the information in the question based on the word limit that is asked in the question. Fine, so this question is for 10 marker also. 400 word का question है, तो 200 word स्वामिता के लिए and 200 word PM विश्वकर्मा के लिए. I hope it is clear to you. Now moving on to question number 5. Write a short note on dry land farming.
अब बहुत ही छोटा क्वेश्चन पूछ लिया है, 10 नंबर का क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ड्राई लैंड फार्मिंग। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन को कैटेगराइज करते हैं कि इजी है, मॉडरेट है, डिफिकल्ट है। मैं बोलूंगा ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। व्हाई इज इट सो? क्वेश्चन सबसे पहली बात है बहुत ही जनरल है, कुछ आपसे ऐसा नहीं पूछा कि यार प्रॉब्लम बताओ ड्राई लैंड फार्मिंग की या फिर फीचर बताओ, ऐसी कोई चीज नहीं बोली है। सो यू हैड अ ह्यूज स्कोप दैट हाउ यू वांट टू आंसर दिस क्वेश्चन, हाउ यू वांट टू डिलीवर द इंफॉर्मेशन एज अ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। फाइन, और 10 मार्क का क्वेश्चन है तो ज्यादा लिखना भी नहीं है, ठीक है, 400 वर्ड के अंदर अंदर आपको इसको खत्म कर देना है। एंड व्हाई एम categorizing it again as easy or moderate level question, because it is written as a part of the syllabus. Fine, so you can see in the syllabus it is very precisely mentioned, problems of dry land agriculture. अब again same rule, syllabus cover किया है तो आपको एग्जाम में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। फाइन, you will always be in a comfortable position to answer the questions in the descriptive paper, and you can see in all the questions that we have seen above, question number 1 to 4, I would say in question 1 and 3 syllabus was very relevant. In question number 2 also syllabus was relevant, but along with that the previous year question was also relevant because the question of financial inclusion was asked in 2023 also, ठीक है। और स्कीम में मैंने आपको बता दिया सिलेबस की क्या इंपॉर्टेंस है, और ये क्वेश्चन भी आप देख लो, इट इज वेरी मच लिंक टू द सिलेबस। सो आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन बिकॉज आई डोंट वांट यू टू इग्नोर द सिलेबस, आई डोंट वांट यू टू अंडर एस्टिमेट द इंपॉर्टेंस ऑफ द सिलेबस। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज द एग्जामिनेशन इज कंसर्न। नाउ राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ड्राई लैंड फार्मिंग। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, सबसे पहले ऑफ कोर्स यू विल हैव टू राइट दैट व्हाट इज ड्राई लैंड फार्मिंग। और क्योंकि अगर आपने प्रॉब्लम्स ऑफ ड्राई लैंड एग्रीकल्चर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ड्राई लैंड के क्या फीचर्स होते हैं, कि मिनिमम रेनफॉल कितनी होती है, ड्राई लैंड में मिट्टी कैसी होती है, सॉइल कैसी होती है। फाइन, सो द क्लाइमेट, द सॉइल, द टेम्परेचर, फाइन, एंड व्हाट टाइप ऑफ रीजन इट इज फाउंड। फिर आप क्या लिख सकते हो, सोच के देखो, यू कैन टॉक अबाउट द प्लांट्स ऑल्सो, द टाइप ऑफ प्लांट दैट आर ग्रोन इन द ड्राई लैंड फार्मिंग रीजन। सो 4-5 पॉइंट तो ऐसे ही बन गए। तो अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा था, you could have written this answer in a, I would say, in a good format in order to satisfy the word limit. और उसके बाद आप क्या कर सकते हो, अब आप देखो, अगर आप सिर्फ फीचर लिखोगे मैक्सिमम, जैसे मुझे 4 से 5 पॉइंट दिमाग में है, ठीक है, सो आपको भी 4 से 5 पॉइंट ही आएंगे या मैक्सिमम 6 पॉइंट आ जाएंगे क्योंकि आप पढ़ के जाओगे, तो यू विल बी एबल टू राइट 6 पॉइंट्स। बट क्या पता आप 6 पॉइंट लिखो और आपका 400 वर्ड का जो टारगेट है वो टच ना हो, यू आर नॉट एबल टू complete, you are not able to touch the word limit. So in order to compensate that, what you can do, you have two options. First of all, you can talk about the challenges of dry land farming, कि यार ड्राई लैंड फार्मिंग में क्या चैलेंज है, इरिगेशन के चैलेंज है, ठीक है, सस्टेनेबिलिटी के चैलेंज है, ठीक है, इनकम के चैलेंज है, फार्मर्स इनकम गेट्स हैम्पर्ड, सच टाइप ऑफ पॉइंट्स यू कैन जनरेट, डिफरेंट टाइप एन नंबर ऑफ पॉइंट्स आर देयर। तो आप वो लिख सकते हो अपना कंटेंट बढ़ाने के लिए, या फिर आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो द टेक्नोलॉजीज दैट आर यूज्ड इन द ड्राई लैंड फार्मिंग, फॉर एग्जांपल मिनिमल एग्रीकल्चर, फाइन, द सॉरी मिनिमल एग्रीकल्चर नहीं, मिनिमल irrigation, for example the precision irrigation that is there, fine, precision farming that is there, drip irrigation that is there, you can talk about those things also, the type of technologies that are used. So it is all up to you that what type of information you carry and what type of information that you prioritize to write as a part of this answer. कोई information सही या गलत नहीं होगी, मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको शॉर्ट नोट लिखना है ड्राई लैंड फार्मिंग के ऊपर, बट हाँ फीचर्स लिखना इंपॉर्टेंट है, फीचर्स इज समथिंग दैट यू कैन नॉट मिस। आफ्टर दैट ईदर यू कैन राइट द चैलेंजेस एंड सोल्यूशन और यू कैन राइट द टेक्नोलॉजीज दैट आर यूज्ड एज अ पार्ट ऑफ ड्राई लैंड फार्मिंग, तो उससे आराम से आप 400 वर्ड्स टच कर जाओगे। फाइन, so I hope it is clear to you. Now let us see the answer. So as I told you, first of all what you have to do, you have to write some introduction that dry land farming क्या होती है, what is dry land farming, then you can talk about the features with respect to dry land farming, that is the dependence on rainfall, the use of drought resistant crops is very common, then the soil and water conservation techniques, then the mixed cropping and crop rotation is there, find all such type of things are there. Then what are the challenges in the dry land farming, fine, it is low, it provides low and uncertain yields, vulnerability to climate change, soil degradation is there, and how we can improve it, fine, for example with the help of water resistant techniques, drought resistant varieties ka promotion karna, then crop insurance, fine, in a very precise format you can write it, and that's how you can complete your answer. And I have already told you the approach, that how to reach the word limit if you have the limited content with respect to the demand of the question. Fine, I hope it is clear to you. Now this question is easy. क्यों इजी कैटेगराइज किया मैंने, क्योंकि डायरेक्टली सिलेबस में से पूछा है, और मैं सिलेबस से पूछी हुई चीज़ को बिल्कुल भी डिफिकल्ट कैटेगराइज नहीं करूंगा, बिकॉज प्लीज अंडरस्टैंड दैट इट इज़ अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आप एक नेशनल लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हो और आप एक सिंसियर एस्पिरेंट हो और आपने उसका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं किया, तो सोचिए कितनी बड़ी गलती हो सकती है। तो सिलेबस तो कंप्लीट करना पहली प्रायोरिटी होती है, उसके बाद ही करंट अफेयर और बाकी चीज़ें आती है। तो ये तो मिनिमम चीज़ है जो करनी है, और आई वुड से द बेस्ट थिंग इज दैट फॉर नाबार्ड
आई वुड से मिनिमम इज ऑलमोस्ट सफिशिएंट. तो 6 में से 4 क्वेश्चन करने होते हैं और इजीली अगर आपने सिलेबस कंप्लीट किया है वर्ड टू वर्ड अच्छे से, तो आप उस टॉपिक को, उस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो एंड आप यू कैन स्कोर गुड मार्क्स विद रिस्पेक्ट टू डिस्क्रिप्टिव पेपर, एंड दैट्स वेयर आई वुड से यू गेट अ कॉम्पिटिटिव एज. And at the end what you can do, you can write the conclusion also. Now let us move on to the last question, that is question number 6. अब sorry to say but इस question को भी मैं easy to moderate में डालूंगा. क्यों? क्योंकि question पढ़ लो सबसे पहले. How does India's storage system contribute to country's agriculture and food security? और question आप देख लो डायरेक्ट सिलेबस में से है. Let us see the syllabus. You can see the screenshot over here. Controlled and modified storage, perishable food storage. The question has straightforwardly asked from the syllabus. So I would say कि ऐसा मत सोचना कि मैं जानबूझ के चीज़ों को इजी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज चीज़ अगर क्वेश्चन डायरेक्टली सिलेबस में से आ रहा है, सो व्हाई टू कैटेगराइज इट डिफिकल्ट. द पॉइंट इज दैट आई डोंट थिंक दैट देयर वाज a single question that was out of box or that was difficult as a part of this NABARD paper. Fine. So that is, I would say, is one of the conclusions or the key takeaways that you can carry. Then how we can answer this question, of course, first of all you are going to write about India storage system, और ये content आपके पास होना चाहिए because perishable food storage और ये controlled and modified storage ये आपके syllabus का part है. तो आपके पास इससे related content होना चाहिए कुछ introduction के लिए कि यार मैं storage को के बारे में क्या लिखूंगा, मेरे पास कुछ तो data होना चाहिए कि यार इंडिया में food grain कितना store होता है. Fine. And you can talk about some sort of scheme also. You should know about that because this is something that is the minimum content that you need to know with respect to any keyword with respect to the syllabus. Then you can talk about, I would say, the introduction. Then you can talk about the role of India's storage system in food security, where you can write about the preservation of foods, of grains, then the buffer stock management, then about the public distribution system. Fine. Then all these things you can write. Then you can talk about the challenges of India's storage system, and then after that you can write the conclusion as a part of the conclusion you can talk about the way forward also. Fine. So you can see I pasted a screenshot. I forgot to remove it from this answer, but the thing is that this question was also covered by EduTap. Now, I hope it is clear to you. Now, as I told you that the intent behind this session is not to provide you knowledge that what is a horticulture, what is storage system, also sort of thing. The only intent is basically how you can structure the information, what is the difficulty level of the question, and what is the source of the question. Fine. So that is something that I think we have covered in a precise manner and in a holistic manner. And if you will download the document, you will get this topic-wide distribution of questions also. For example, how many questions have been asked from these different topics in 2024 and in 2023 also. So that's how you will be able to know that what are the key or the important areas. Then after that we have this, I would say, topic wide difficulty level also. This box is also there, and then we have the key takeaways. Then by the way, these key takeaways I've already told you as a part of it. If you're somebody who is preparing for this exam through self-study, then you can follow these sources also. Fine, as a part of it. And if you're somebody who does not want to go for self-study, maybe you do not have time, maybe you do not have guidance, because the thing is that if you will read multiple sources, the information is very much scattered. So it is very important that you have proper guidance so that you can proceed in order to cover the syllabus in a holistic. So students, with this we have come to an end of our today's session. I hope it was helpful and insightful for you. Now students, if you are interested in having the paid mentorship for your NABARD grade examination, then you can enroll yourself into our NABARD grade phase 2 live plus recorded crash course. As part of this crash course, we are going to provide you the live classes, recorded classes, solve previous year question, chapter wise test, descriptive model question and answers, descriptive fodder material, and the full length mock test. Apart from that students, there is a NABARD grade A phase 2 test series also, and as part of this test series we are going to provide you the PYQs, chapter wise mock test, current affair mock test, and the full length mock test. So these are the deliverables currently available on our website. If you are interested, you can enroll, and this is the good time to visit our website, because currently as part of New Year celebration we are offering you a flat 77% off on all our NABARD grade A courses. You can use the code New Year 77 and you can enroll yourself into these courses. On that note, I'm ending this session here. Thank you so much and I wish you all the very best.